Good evening, guys. A very good evening to all of you. How are you all doing? Let me know in the chat. Audio, videos, everything clear? So, welcome to the session. This is the part formula revision series for chemical reaction engineering. That is Formula Firestorm. Ignite your GATE 2025 preparations. Actually, I will say boost up your GATE 2025 preparations. So, in this series, part three, we are doing the discussion on the important formulas and equations of the subject. Plus, we are also doing some practice questions. Okay. And in today's session, the agenda is to talk about the kinetic equations for constant volume reaction systems as well as variable volume reaction systems. Okay. So, and I have already told you, we will discuss these topics, means all the topics of chemical reaction engineering in the series. Introduction and mole balance we have done. Now today is all about reaction kinetics, basically the kinetic equations. First part of this we discussed already in last session, where we talked about the rate constant K, order of reaction, as well as molecularity. Now, today we will start our discussion on kinetic equations. So if you guys are ready, then let me know. So just mention in the chat. Are you guys ready? Shall we start the discussion? Good evening, very good evening, Vaibhav. Yes, okay. तो kinetic equations की बात करते हैं. तो kinetic equations are basically the mathematical relations between the rate constant K, reaction time T, and concentration or conversion of the reactant. Okay, concentration and conversion of the reactant. So this mathematical relation is known as kinetic equations. While again I am repeating, the rate equations are the mathematical relations between rate of reaction, rate constant K, and concentration of the reactants. Okay. So here for the kinetic equation, you guys know how we can do it. उससे पहले हमें चीजों को समझना जरूरी है about the reaction system. So in homogeneous reaction system or in general, you guys know that we can classify the reaction system in two categories. One is constant volume reaction system, that is CVRS, constant volume reaction system, and one is VVRS, that is variable volume reaction system. Sorry, variable. As you guys know, constant volume reaction systems are those where the volume of the reaction mixture at any time t will be same as its initial volume, means remains constant during the reaction progression. Okay, or you can say with the reaction time. And variable volume reaction system is the one where volume of reaction mixture at any time t changes or will not be same as its initial volume. Okay, so in general,
we can write the volume of reaction mixture at any time t V as V naught, the initial volume of reaction mixture, is equal to 1 plus epsilon A XA times of P naught over P, T over T naught. Okay, in general, where at constant temperature and pressure, you know that the equation will be reduced to V is equal to V naught 1 plus epsilon A XA. These are the general expressions for volume of reaction mixture with reaction time or reaction progression, you can say, since XA is coming. And here I hope you guys understand that for constant volume reaction system, the value of epsilon A will be 0. And for variable volume reaction system, the volume of epsilon A will be non-zero. It could be negative, it could be positive, doesn't matter. Okay. And how can you calculate epsilon A, that we will see when we will talk about the kinetics. Now, if I talk about the constant volume reaction system. So first thing you should know that rate of reaction we can define as, we know that for homogeneous reaction system, Ri can be written as 1 upon V dNi over dt. Okay. So there is one more thing which you should know. That is the concentration. Concentration represents the amount of any substance in the mixture. So here molar concentration for any species I can be written as moles of component I in the mixture to the volume of reaction mixture. Correct? So here, if you look, Ni can be written as Ci into V as per the definition. And since V is the volume of reaction mixture which is constant, for CVRS, so V will come outside the differential term and we will left with dCi over dt. Okay, this is how we write the rate of reaction. So you know that for reactant A in any chemical reaction, suppose we have a reaction something like this. So for reactant A, by the definition, minus Ra will be equal to minus dCa by dt. And for product B, Rb can be written as dCb over dt. Okay, so this is the logic is same like we have already discussed when we talked about the minus Ra equal to 1 upon V minus dNA by dt. Same logic, mathematical sign. This minus is the mathematical sign and this is just a notation. So here you guys can see for any chemical reaction, minus Ra, suppose A is the reactant, the basis reactant, or actually you can say the limiting reactant, minus Ra can be written as minus dCa by dt. Okay, so here if you rearrange this, you will get dt equal to minus dCa over minus Ra. Now if you integrate this, you guys know the limits at reaction time t equal to 0, concentration of A in the reaction mixture will be Ca0. At any reaction time t, it will be Ca. So here when you will solve, you will get T is equal to
minus of integration of TCA over minus RA from CA naught to CA. And from Power's law, you can put the value of minus RA and you can find out all the kinetic equations. है ना? I hope you know from power law, suppose nth order reaction it is. So minus RA can be written as KCA power n. है? So when you put this value here, ultimately your equation which come out to be on solving, that will be n minus 1 KT times of 1 upon CA power n minus 1 minus 1 upon CA naught power n minus 1. This is the general equation for kinetic equations in CVRS. And you should know that this equation, तो CVRS में आपको कोई भी reaction order दिया है, this is valid for all except for one. This equation is valid for all values of n except one, first order reaction. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये एप्लीकेबल है. हंसकर जी लो यार, क्या बात है, क्या नाम रखा है आपने, मजा आ गया. So that's how you can solve the problems. अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या करेंगे, why this will not be valid, see in the case when you put minus RA for first order reaction, you will write it as KCA. Now 1 upon CA, if you integrate this, so it will be ln CA, and after putting the values, it will become 1 upon K ln CA naught over C. So this is the equation for first order reaction. By using these kinetic equation, you can solve anything. अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, कुछ पॉइंट्स आते हैं. लाइक अगर सपोज हमारी इन जनरल यहाँ पे जो CA है, फॉर एग्जाम्पल CA इज Na upon V. If you put the value of Na, it will be like in terms of conversion, Na naught 1 minus Xa. We are talking about the CVRS. So you know V can be written as V naught. तो यहाँ से आप देखोगे तो CA इक्वल टू हो जाता है CA naught इंटू 1 minus Xa. एंड इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो Xa इक्वल टू 1 minus CA over CA naught. करेक्ट. So this is the thing. Second, अगर आपके पास CB है, you know NB upon V, you can put the value of NB in terms of Xa. You know that already. तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ because you guys already know how to put those values. We have discussed in the first session. So it will be CB naught minus B upon A times of CA naught into Xa. Similarly for CC, that will be CC naught plus C upon A times of CA naught into Xa. And CD will be ND upon V, that is when you put the value of ND in terms of Xa. So this will be the equation.
These are the few things which all of you should know. These are the kinetic equation for CVRs. अब इसमें एक और चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, that is one important fact. When order of reaction is greater than 1, then XA will always be less than 1. We cannot achieve conversion ever. Okay? We can't, even not theoretically. ठीक है, थियोटिकली भी नहीं कर सकते. अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब वो ये क्या बोलने का ट्राई कर रहे हो आप, तो देखो suppose if I talk about the second order reaction, for example first order reaction ले लेते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी काइनेटिक इक्वेशन है ln CA0 over CA is equal to K into T. And if you put the value of CA in terms of conversion, तो आपकी इक्वेशन आप लिख सकते हो ऐसे as minus ln 1 minus XA equal to KT. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो XA equal to आ जाएगा 1 minus e to the power minus KT. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं what will be the time at which XA equal to 1, what will be the time reaction time needed to achieve XA equal to 1? So here you guys can see T will be infinite. करेक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मतलब T इक्वल टू इनफाइनाइट. एटलीस्ट थियोटी इट इज पॉसिबल थियोटिकली. ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ इट इज पॉसिबल थियोटिकली. थियोटिकली पॉसिबल तो है ना टू अचीव एक्स इक्वल टू 1. But if I talk about the second order reaction, for example, you have the kinetic equation n minus 1 kt equal to 1 upon Ca power n minus 1 minus 1 upon Ca naught power n minus 1. Put the values, it will become something like 1 upon Ca minus 1 upon Ca naught equal to kt. Okay, and now if you put, this is the kinetic equation for second order reaction. If you put the value of Ca in terms of conversion, it will become Xa upon 1 minus Xa equal to K into Ca naught K. Or you can say Xa is equal to K Ca naught into T upon 1 plus K Ca naught into T. Now here, tell me, what will be the time needed to achieve Xa equal to 1? What will be the time needed to achieve Xa equal to 1? क्या होगा बताओ? So here if you see, maybe by putting some mathematical arrangements, you can say T equal to infinite, but that's not right. Because logically, if you check this equation, this expression, if you check, so you can see numerator is less than the denominator. Numerator is less than denominator, matlab Xa is less than 1, always. तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है. This question become irrelevant here. For second order reaction, we cannot achieve Xa equal to 1. So time की तो बात ही नहीं आ सकती. Okay, कोई क्वेश्चन ही गलत है. अरे Xa equal to 1 होगा ही नहीं कभी. Theoretically ही नहीं हो रहा. You can see. But theoretically it is not possible. So why we will talk about this time stuff? है ना? I hope you are understanding. So this is a fact. That's what I'm saying. When order of reaction is greater than 1, be it 1.5, 1.1, 2, 3, 7, whatever, Xa will always be less than 1. Okay? और आई शुड से Xa मैक्सिमम. मैक्सिमम वैल्यू कभी भी Xa की 1 या उससे ज़्यादा 1 पॉसिबल ही नहीं है.
एंड यू नो x से ग्रेटर देन 1 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल. We have seen that already in the first session, first part. And similarly, when n is less than 1, x equal to 1 is possible in finite time. In finite time, or you can say definite time. But when n is equal to 1, x equal to 1 is possible to achieve, but it will take infinite time, as we have seen. Okay, so these are the few things which all of you should know. Okay, now let's do some practice questions. I hope all these things are clear to all of you people. ठीक है, थोड़े से practice question करते हैं. For better understanding. So start करते हैं with problem 1. Suppose we have a problem. It is given that for a chemical reaction, calculate the time needed to obtain x equal to 1. Sorry, क्या है? Sorry. Calculate the percentage conversion of A in 2 minutes. Data given है आपको. Initial concentration of A, Ca0 is 10 mole per liter. The people who are watching live, you can pause and try. And the people who are watching this in recording later on, I would suggest you to pause, solve, and then check. Okay, let's try it. तो आपको order of reaction दिया है 0.5 or you can say 1/2. So here you know that from nth order kinetic equation, n minus 1 kt equal to 1 upon Ca power n minus 1 upon Ca naught power n minus 1. The kinetic equation for this will become Ca naught power half minus Ca power half is equal to kt upon 2. Okay. So I would suggest all of you, whenever you are going to solve the problems related to kinetic equations of CVRS, ठीक है, kinetic equations for CVRS, always try to solve in terms of concentration. ऐसा कोई rule नहीं है. It is just I am telling you based on my experience. If data is available in concentration for CVRS system, always try to solve them in terms of concentration only. Why? To save some calculation time. ठीक है. अब यहाँ पे आप समझ जाओगे. यहाँ से अगर हम CA निकाल लें तो X निकालना easy है, because you know X equal to क्या होता है. We know that 1 minus Ca upon Ca naught, है ना. तो if I can calculate Ca, I will get Xa. तो यहाँ से चेक करते हैं. तो Ca power half will be equal to Ca naught power half minus Kt upon 2. So let's put the values. Ca naught is 10, power half minus K is 4, as you can see. T is 2 upon 2. I am not writing the units because all the units are consistent. You can check. ठीक है. Concentration मोल पर लीटर में है, ये मोल पर लीटर पर मिनट में है, टाइम मिनट में, तो all the units are consistent. तो यहाँ से आपका Ca पावर हाफ आ जाएगा
What will be the value? Minus 0.838 approximate mole per liter. Okay, this is what we are getting. Now, if you integrate this, oh sorry, if you take the square, you will get Ca equal to 0.702 अप्रॉक्स मोल पर लीटर. यहाँ ये मोल पर लीटर नहीं होगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर रूट होगा. यूनिट्स में. तो सी ए आ जाएगा, तो यहाँ से फिर आपका एक्स आ जाएगा. दैट इज 1 माइनस सी ए अपॉन सी ए नोट. तो यू कैन चेक. तो दिस एक्स ए विल कम आउट टू बी 0.9298, और यू कैन से 92.98%. ठीक है, दिस इज द आंसर. ऐसा नहीं करना. आप बोलोगे सर आपने किया. यस, दिस इज अ फॉर्मूला रिवीजन सेशन. तो आपको मैं पहले बताऊंगा ना आप लोग क्या गलती करने वाले हो. ऐसे हमें नहीं करना है. दिस इज रॉन्ग. वाई? क्योंकि मैं आपको बताता हूं. बिकॉज कंसंट्रेशन इज what is concentration? Concentration is amount of any substance in the mixture. Okay, and concentration is the amount of substance in the mixture. So you know that concentration equal to negative, not possible. And similarly, the square root of concentration equal to negative is also not possible. तो ये जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर why you can do this? ठीक है, तो क्या पॉसिबल है? तो इन एग्जाम सी इट इज दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द डेरिवेशंस एंड स्टेप्स एवरीथिंग. ठीक है, बट हम यहाँ पे वो सब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बात करना जरूरी है. पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे ना आपको. दिस इज नॉट पॉसिबल. यहीं पे आपको रुक जाना है. तो इन एग्जाम व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और इन एनी टेस्ट, when you are solving the problem and by chance you are getting Ca equal to negative or square root of Ca equal to negative, something like that, तो that is not possible. और अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो आपको वहीं रुक जाना है. ठीक है, बट आप कहोगे सर हमारा तो आया है एग्जाम में या कैलकुलेशन में. तो अगर आया है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट, आइदर यू हैव डन द कैलकुलेशन मिस्टेक, और or the reaction has been completed well before the given time. ठीक है, तो अब यहाँ आपको चेक करना है तो चेक कर लेते हैं. तो इसका चेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? जस्ट फाइंड आउट द टाइम needed to achieve x equal to 1. Time required for x equal to 1. So see, we have the equation. Let's put the values. X equal to 1 means C equal to 0. All A has been reacted. Nothing is remaining. K is 4. T is unknown 2. So when you solve this, you will get T equal to 1.58 minutes approx.
And when you are getting t equal to 1.58 minutes, इसका मतलब reaction has been completed at 1.58 minutes only. And they were asking for the 2 minutes. So we were doing the calculation for extra time, additional time. That's why mathematically the values are this. The value is coming negative. Okay? Because mathematics is just a tool, nothing else. Mathematics आपको physical significance नहीं बताता. Mathematics just help us to find out the values and everything, to relate the things. Okay. So that's why it is important to understand the physical significance. So here we have seen the time the reaction has been completed well before the given time, means in 1.58 minutes only. And what they are asking, they were asking the conversion for after 2 minutes or in 2 minutes. Okay. So reaction completed in 1.58 minutes only. तो 2 minute पे भी वही रहेगा conversion. 200 years बाद भी वही रहेगा, है ना? So 100%. That is the answer. Is it clear to all of you? That's how we should solve the problems. ठीक है? उनका concept समझना बहुत important है. So tell me, was it fun? Was this question you find it relevant? कुछ मजा आया इसमें? समझ में आया? सीखने को मिला? क्या करना है, क्या नहीं करना है? Now, let's try another problem. For a chemical reaction, the rate expression at 300 Kelvin is found to be NCA square mole per liter per minute. Okay. Calculate the percentage conversion of A obtained in 20 minutes if the reaction takes place at 400 Kelvin and Ca0 is given as 100 mole per meter cube. Got it? Now let's check. Let's try. So here it is given that rate of the chemical for a reaction, rate expression means rate of reaction, rate law, rate equation, कुछ भी आप बोल सकते हो. That is at 300 Kelvin is this. ठीक है? At 300 Kelvin, the rate equation minus RA is 10 Ca square mole per liter per minute. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लीटर पर मोल पर मिनट. You know the units of K. Concentration units power 1 minus 10 into time inverse. ओके, तो यहाँ पे अब K इक्वल टू हो जाएगा 10.
तो आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज कन्वर्जन. तो दिस इज order of reaction is 2. So for second order reaction, you guys know that the kinetic equation is XA is equal to 𝐾𝐶A0T upon 1 plus 𝐾𝐶A0 into T. ये हमने देखा था अभी, क्योंकि x से पूछा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है. अब तो यहाँ पे 𝐾𝐶A0 हमें गिवन है 100 मोल पर मीटर क्यूब. T गिवन है 20 मिनट्स. K गिवन है ये, और आपको सॉल्व करना है. तो अगर आप K की ये वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका जो कन्वर्जन आएगा वो 300 केल्विन पर आएगा. बट आपसे पूछा किस पर है? 400 केल्विन के लिए. ठीक है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले आपको K की वैल्यू निकालनी है एट 400 केल्विन विद द हेल्प ऑफ K एट 300 केल्विन. ओके. तो अब उसके लिए क्या चाहिए? सी कुछ गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वी विल यूज द आर्हेनियस थ्योरी. ओके. तो फ्रॉम आर्हेनियस थ्योरी यू गाइस नो दैट ln K2 by K1, that is rate constant K at temp T1 and T2 temperature, equal to E by R 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो यहाँ पे E भी चाहिए हमें, वो गिवन नहीं है तो मैं दे देता हूँ. मैंने पहले जान के नहीं दिया था ताकि आप लोगों को क्लियर रहे. ये डेटा गिवन E is equal to 9150 कैलोरी पर मोल. ओके. तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हो. So let's put the values. K2 is unknown, K1 is 10, which is at 300 Kelvin. E is 9150 calorie per mole. Value of R in terms of calorie per mole, I hope you guys know that. It is about 1.987 calorie per mole per Kelvin. Approximated. Multiply by 10, 1 upon T1, that is 300 Kelvin, minus T2, that is 400 Kelvin. So after solving this, you guys will get K2, which is nothing but K at 400 Kelvin. क्या आएगा वैल्यू? तो ये आ रहा है आपका 464.07 लीटर पर मोल पर केल्विन. ओके. तो के आ गया. अब वैल्यूज रख के हम एक्स से निकाल लेते हैं. सो यू नो एक्स इज इक्वल टू के सी ए नॉट टी अपॉन 1 प्लस के सी ए नॉट टी. अब यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान देना है. ये जो सी ए के है ये आपका लीटर पर मोल में है. केल्विन नहीं होगा, सॉरी, मिनट होगा. लीटर पर मोल पर मिनट यूनिट्स जो है के की. यस. ओके. और जो सी ए नॉट है वो आपका मोल पर मीटर क्यूब में है, तो आपको उसे चेंज करना होगा पहले. And I hope you know how to do that unit conversion. So
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ से आपका CA0 आ जाएगा। Sorry guys, CA0 will be 0.1 mole per liter. Okay, so now just put the values and solve. So K is 464.07. आप K की यूनिट्स भी चेंज कर सकते हो मीटर क्यूब पर मोल में, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट यहाँ पे CA0 मैंने इजी था तो वो कर लिया। तो K is 464.07 multiply by CA0, that is 0.1 into T, that is 20 minutes, divided by 1 plus 464.07 multiply by 0.1 into 20. So you will get XA equal to 0.9989, or you can say 99.89%. So this is the answer. I hope it is clear. So this should be clear to all of you that in exam, whenever they will give you the data or whatever such type of stuffs, it is important to read the statement. And whenever you need to find the values of rate constant K or something at any different temperatures, so by default we will use Arrhenius theory if nothing is given. Okay, so that's how you guys can solve the problems related to kinetic equations of CVRS. अब आगे बात करते हैं VVRS के। So for variable volume reaction system, you guys should understand this. Volume of reaction mixture V at any time can be written as Y naught multiplied by 1 plus epsilon A XA times of P naught upon P times of T upon T naught. Okay, and at constant temperature and pressure, the equation will reduce to V naught 1 plus epsilon A XA, like this. अब यहाँ पे जो epsilon A है, this is called volume expansion factor. And you can calculate the value of epsilon A very easily with the help of this delta into y naught. Okay, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले तो फैक्ट कि जो एप्सिलॉन ए है हमारा वो कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन ए इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एंड feed composition. If feed composition and reaction is fixed, so epsilon A will be constant. If you change the feed composition, then epsilon A will change. Okay, so it depends only on feed composition. And feed composition may be basically, I should write, to be specific, the mole percentage of A. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फीड कंपोजिशन में A चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब चेंज हो रहा है, दैट इज पॉसिबल, है ना, बट एंड मोल परसेंट ऑफ A इज कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन A तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए से इन जनरल फीड कंपोजिशन हम बोलते हैं, बट टेक्निकली इट शुड बी लाइक मोल परसेंटेज ऑफ A. ओके, तो डेल्टा क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा होता है किसी भी रिएक्शन के लिए ओवरऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A. And I hope you guys know how to calculate the overall stoichiometric coefficient. Okay, and Y naught is the initial mole fraction of A in the feed. Simple. तो यहाँ पे आपकी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो क्लियर होने चाहिए आपको अबाउट द कंसंट्रेशन स्टफ, लाइक सपोज कोई CA है, तो CA is Na upon V,
तो आप Na लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स से, V लिख सकते हो, V विल बिकम V0 1 प्लस एप्सिलॉन A एक्स से मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन P अपॉन T0 इन जनरल। तो यहाँ से आप देख सकते हो CA इक्वल टू हो जाता है आपका CA नॉट 1 माइनस एक्स से ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन A एक्स से टाइम्स ऑफ P upon P0 and T0 upon T. Okay, this is in general. And if temperature and pressures are constant, so you know this term will vanish and only this much part will be remaining. But doesn't matter. Similarly, for CB and CC, you can write if B is also a reactant, so it will be like CB naught minus B upon A times of CA naught into XA divided by 1 plus epsilon A XA multiply by pressure and temperature terms. Okay. Similarly, if you have to write for D, CD will be like CD naught plus D by A times of CA naught into XA divided by 1 plus epsilon A XA into this. Got it? Same for CC. So in general, you can write these. And if temperature pressure are constant, तो वो सिर्फ left one first part बचेगा. और VVRS के लिए अगर आपको kinetic equations निकालनी है, so you guys know that. How can we do it? यहाँ पे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो VVRS के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस RA, वो बन जाता है CA नॉट ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन A XA टाइम्स ऑफ DXA ओवर DT। एंड दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ नहीं करना, माइनस RA इक्वल टू -1/V DNA ओवर DT होता है। पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ Na at constant temperature pressure in terms of XA. So when you rearrange them, you will get this. तो माइनस RA आ गया और इसी से हमें सारी काइनेटिक इक्वेशन VVRS की सॉल्व करनी होती है। तो हियर इफ यू सी DT विल बिकम CA नॉट ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन A XA times of DXA over minus RA. And if you integrate this, you know at t equal to 0, conversion is 0. At any time t, it will be XA. This is reaction time. तो in general आपका t आ जाता है कुछ ऐसे, t is equal to integration CA naught times of integration from 0 to XA of DXA divided by 1 plus epsilon A XA into minus RA. तो यहाँ पावर लॉ से आप माइनस RA की वैल्यू रख लेना और सॉल्व कर लेना। लाइक कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए केस ये, सेकंड के लिए केस ये स्क्वायर, लाइक दैट यू विल गेट योर काइनेटिक इक्वेशंस। तो मैं इन जनरल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए अगर आप करोगे तो t इक्वल टू है मेरे पास CA नॉट टाइम्स ऑफ DXA ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन A XA इंटू माइनस RA। माइनस RA क्या हो जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? KCA, है ना? एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिमेंबर। तो यहाँ पे आप CA की वैल्यू रखोगे, क्या हो जाएगी? ये K नहीं है, ये CA नॉट अपॉन K हो जाएगा। ओके,
K will go outside. And CA की जगह आप क्या लिख सकते हो? You can write CA as CA naught 1 minus XA divided by 1 plus epsilon A XA. So you can check, you will get T equal to minus ln 1 minus XA over K. तो अगर आप यहाँ देखो तो दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन सिमिलर एज CVRS. ठीक है, CVRS में भी यही थी, VVRS में भी यही है. तो ये इन जनरल आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन since it has same kinetic equation in terms of conversion for CVRS as well as VVRS. So in general you can write for first order reaction, first order reaction follows same kinetics in CVRS as well as VVRS. समझ रहे हो ना आप लोग? तो if you have any doubt you can discuss anytime through comment box or through the telegram channel. So you have my telegram channel. The link of the channel you can find in the description of the video. That is gate with ace. Okay, तो वहां से आप देख सकते हो. This is the kinetic equation for VVRS for first order reaction. Okay, in the same way अगर आप देखोगे second order reaction के लिए या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या जीरोथ ऑर्डर के लिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं. तो जैसे अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हो खुद से. यहाँ पे आप RA की जगह केस ये स्क्वायर रख के सॉल्व कर सकते हो, रीअरेंज एंड ऑल. तो अल्टीमेटली वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी ऑन रीअरेंजमेंट. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ K 1 upon K CA naught integration of 1 plus epsilon A XA divided by 1 minus XA square into dxa. और इसे फाइनली अगर आपको लिखना है तो वो आप इसे सॉल्व करके भी अगर लिखोगे तो ऐसा कुछ आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए प्लस एप्सिलॉन ए टाइम्स ऑफ एल एन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू टी. ओके, ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, वो आप लोग चेक कर सकते हो खुद से ऑन सॉल्विंग दिस. तो आपको याद करना है याद कर लो, सॉल्व करना है सॉल्व कर दो, कैसे ही कर सकते हो. So I hope these things are clear guys. Okay, बाकी आज के लिए इतना ही. अब हम थैंक यू बिकॉज इट इज टाइम. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन करेंगे VVRS के. ओके, एंड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आप लिख सकते हो. A feed mixture or sorry directly clear, a gas mixture having 50% A and rest inerts entered a reactor at 360 Kelvin and 420 kilopascal. Undergoes the following reaction. Reaction is like 2A gives 3B.
and having minus Ra is equal to 4 Ca. या फिर एक काम करो, माइनस Ra अभी मत, this is the reaction. Calculate the reaction time needed to achieve 40% conversion of A. ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप ये लिखो, माइनस Ra इज इक्वल टू 0.10 Ca पावर n मोल पर लीटर पर मिनट. तो आप बोलोगे सर पावर n का क्या मतलब है, देखो मैं बता दूं. सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2. तीनों के लिए सॉल्व कर लो, n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए. ओके, मतलब एक तरह से आपका 3 प्रॉब्लम बन गई. ओके, ट्राई दिस. So we will discuss in the next session if you guys will be having any doubt. So that's all for the day, guys. Thank you so much. बाकी मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. हमारा अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, तो you guys can check. Okay, if you, these are the rankers, all India rankers 1, which were the Unacademy learners last year. You can see 7 learners were there. और हमारा ऑफर चल रहा है, in which you will get 5,999 4 months subscription, that is 3 plus 1. Okay, तो टोटल 4 months सब्सक्रिप्शन ओनली इन 5,999 रुपीज. आपको क्या करना है, वहां जाके एजुकेटर कोड यूज करना है ACE009. ओके, बट रिमेंबर दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर न्यू लर्नर्स. ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी अन अकेडमी के सब्सक्राइबर हो एंड आपका सपोज सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है एंड यू जस्ट वांट टू टेक इट फॉर एक्सटेंड इट फॉर 3-4 months ओनली, यू डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा, तो सब्सक्राइब बाय अ न्यू नंबर. ठीक है, क्योंकि सेम नंबर पे आई डोंट नो कि वो होगा या नहीं होगा, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो अगर होता है तो. बट एज पर माई, एज पर द इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम अदर एजुकेटर्स, आई थिंक इट वुड बी गुड इफ यू डू फ्रॉम द न्यू नंबर, है ना. तो बाकी हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर को, विच इज गोइंग ऑन करंट. And in November, after Diwali, my subjects and of course our subject will also start in the crash course. So see you guys in the next class tomorrow. Till then, bye bye, take care, tada. प्लस फीचर्स मैंने आपको कल बताए थे, आज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. रेजर हैंड का ऑप्शन है जिसमें आप ड्यूरिंग द लाइव क्लास वर्बली वॉइस कॉल के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो ड्यूरिंग लाइव क्लास. ठीक है, वहीं पे ऑप्शन आता है रेज हैंड, तो वॉइस के थ्रू आप अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. इसके अलावा क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलते हैं, इन क्लास पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं एजुकेटर की साइड से, एजुकेटर के टेलीग्राम एजुकेटर कम्युनिटी में आपको ऐड कर फीचर किया जाता है, ऐड किया जाता है. एंड this subscription is also similar to regular subscriptions where you will get all the access of previous classes and the upcoming live classes. So that's all for the day, guys. See you in the next session tomorrow. Till then, bye bye, take care, tada, have a great day ahead. And if you like and subscribe the session, like the session, if you feel that these sessions are helping you really to boost or to give that fine tuning finishing touch, so you can share with your friends or live, like it and mention in the comment box. Thank you.